in December, I was called in one TV program in Doordarshan. The anchor gave me 20 seconds to give my message to the youth and others in terms of water bodies. In fact, they had shown a clip that day, and that was the clip of Khushal sir. It was in shambles. It was full. People were walking on it. I saw the animals even on that. Anyway, when he gave me 20 seconds, I said just one word, ehsaas. This ehsaas must come in you. This ehsaas must come in myself, in people, and the government authorities. So I thought with myself, why don't we do something practically on ground? Because a lot of theses have been written. We do a lot of debates and other things, especially on social media. But let us do something practically. So next day I reached near that bridge. It's called Gilsar. When I saw the condition, unbearable, the smell. So the people around came to me and I told them, I will try to help you to clean it. They laughed at me. They said, a lot of people have come here for last decades and nobody has done. Just 1 or 2 days they have stayed and they could not accomplish this goal. फर्स्ट जनवरी 2021 हम यहाँ पर खुशहाल सर पे आए हैं और यहाँ की ये हालत देखकर बस अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। ये देख लीजिए क्या हालत हुई है इसकी। पॉलीथीन बैग्स, डेड एनिमल्स, फ्लोटिंग गार्डन्स, एनक्रोचमेंट, सब कुछ यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हुआ है इसमें। This Khushal lake at one time used to be considered a very, very beautiful lake of Kashmir. Over the years, it's got denuded and degraded, and you can see that all the filth and rubbish from entire city comes into this lake, and this has become a garbage collection point. ये झील इतनी प्यारी होती थी, इसमें दोनों तरफ से होते थे लोटस और उधर झील डल से आते थे विजिटर्स, उनको हम बोलते थे इधर डल पर बैठ के मीम साहब सलाम पत पत गुलाम, यहाँ एंजॉय करते थे हम। मैंने स्विमिंग यहाँ पर सीखी है, तो हम अगर एक पैसा डालते थे ना नीचे, वो नज़र आता था। ये बर्ड्स के लिए एक स्टेशन था, यहाँ रंग बिरंगी बर्ड्स होती थी। यहाँ का नदरू माना जाता था, यहाँ की फिश मानी जाती थी, लेकिन ना नदरू है ना फिश है, सिर्फ इसमें वायरस है। इसमें मुझे लगता है कोविड है। आप अगर इसमें उंगली डालेंगे, ये डेटॉल से साफ करनी है। The most important thing in our Kashmir is to restore these water bodies, which are, I am repeating it, which are not in good condition. They are in shambles. Some are in cesspools. We need to do something. I called my cousins. He is also my friend. And we said that we'll start this work. Next day, we employed some people and I got my team. And as you know, we have did the little inauguration there. And we started the work. Now this initiative has been taken by a voluntary organization called Ligeen Lake Conservation Organization under a project called EHSAS. Collaborated with most of the government departments, and they have engaged the local volunteers from the community who are cleaning this lake right now. And when there is involvement of the community, at that time definitely the achievements are possible, and we hope that since the community is now aware of the benefits of this water and they've started the cleaning drive, government departments will also join together and ensure that it's done. We have seen in the days of Corona, even the smallest life can destroy the whole world. If we are not awakened timely and stopped the degradation of the environment and restored it, the days is not far when the human being will be extinct. It will in itself be an endangered animal.
हम चाहते हैं इसको साफ करें, इसको चारों तरफ चेन लिंक लगाए और जो भी वायलेशन करता है उसको पेनलाइज किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाए। गवर्नमेंट को हरकत में आना चाहिए। जो यहाँ की ये बनाते हैं ना, ये मकान नए नहीं बन सकते हैं, वो गवर्नमेंट कर सकते हैं। हम सिविल मत कर सकते हैं, किसी को रोक सकते हैं इसको मत बनाओ। I'm telling you from my core of my heart that a ray of hope has emerged. Things are moving in right direction. Our divisional commissioner Sahab has taken it, I think, very seriously, and he wants these water bodies to be restored to their pristine glories. ये पहली बार है सर रे ऑफ होप है। ये मुझे कहते थे 30 साल से हम तरस रहे हैं, रो रहे हैं, इनके बच्चे जमीन बन गया आगे इसको, आगे देखिए सर क्या वो भी हुआ डल था। बेसिकली काफ़ी दुख होता है खुशहाल सर, गिल सर, नाला आमिर खान, चोंटपुर देख करके। हमने पिछले काफ़ी डेकेड से काफ़ी कुछ खोया है। वादी कश्मीर यहाँ की खूबसूरती के लिए फेमस थे। पुराने जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स अगर देखते हैं, ऐसे लगता है कि ये कोई फॉरेन कंट्री है। लोग जो है छोटी सी किश्ती में बैठ करके, फॉरेन टूरिस्ट जो वाटर चैनल से पास होता था, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज जो हालात है, जो पिछले कुछ अरसा से बने हुए हैं, काफ़ी दुख होता है। उधर आदमी रहे जो उधर थोड़ा सा इधर करेंगे अरे तो सर हम इनको बताएंगे कैसा करना है। नर के बजाय जब ये साफ होगा तो उनको वो स्वर्ग लगेगा। एक घर मान लीजिए, इनको लगेगा भाई हम तो इतने साल रहे जहाँ पूरी गंदगी थी, स्मेल आता था, अब भले ही हमारा सुगाड़ कम हो गया लेकिन अच्छा हो गया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार है। ये आपका सेकंड ट्रिप है और आज संडे है, सर का छुट्टी का दिन है, मगर इन्होंने अपना टीम गॉड ब्लेस। Very taking the appreciation towards this gentleman because he's doing a noble job. Everybody is supporting this gentleman and he's doing a great job, sir. In 2 months of time, you can well see the difference. Now the people around there have got that mission ehsas which I was looking for, and they now understand the value of their water bodies, and they have started, they are now working with me shoulder to shoulder. बिल्कुल कूड़ेदान बन गया था और ऐसा लग रहा था ये ज़मीन बन जाएगी, बंजर हो गई थी तकरीबन। लेकिन बाद में मंजूर अहमद वांगनू ने स्टेप उठाया, सफाई का बंदोबस्त पहले किया, तो उसके बाद पिछले 2 महीने से यहाँ पर काम चल रहा है। अब कुछ लग रहा है कि दरिया की सूरत इसने इख्तियार कर ली है। जो ये वांगनू साहब है ना, उसने बहुत मदद किया हमको। अब गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं, ये पहले 1 महीने पहले ये लगता था पूरा ज़मीन था, गाय था, कुत्ता था, सब। अब लगता है इधर पानी है, अब साफ पानी है। लेकिन गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे हम, आप भी कुछ मदद कीजिए, मिल के करेंगे। We restored this Khushal sir. We have to see now how we can sustain it, which is most important. जब समाज पूरा जुड़ जाता है तो कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं रहती है। सिविल सोसाइटी ने जो यहाँ इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी काबिल गौर है, काबिल तारीफ है। In last 2 months, we have almost restored Kushal sir, and Gil sir is going to start. Nala Amir Khan, which connects Nagin Pokhribal with the Gil sir, is also being restored through the Lake and Waterway Development Authorities. Our future plan is to restore the water transports
and water channels which were their existence in 1970s and 80s in Kashmir. Environment restoration and maintenance is the collective responsibility. Neither administration nor municipal committee can alone do it. It's our collective responsibility. I appeal to all of you on the eve of World Environment Day to have a good environment and work collectively. Today being International Environmental Day, I'm so happy to inform you that today we have thrown open navigation system from Pokhribal to Gilsar. We, along with Worthi Divisional Commissioner Sahab, District Commissioner Sahab, SMC Commissioner Sahab, Irrigation Commissioner Sahab, and VC Vice Chairman, Lakes and Waterways. They all came today in a shikara, like as we used to take 30 years back. Exactly like that, we took a shikara ride. We have accomplished the mission SOS, which we started almost about 3 months back. I am so happy today. My compliments to my team, Nelco. My compliments to my another team, NATA, Nigin Tourist Trader Association, who worked day and night with me to accomplish this mission. हमारे अलग अलग महकमा और सिविल सोसाइटी ने जो काम की शुरुआत की थी, आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अथर और उनकी जो टीम है, सभी एम्प्लॉयज़ इवन संडे भी नहीं देखते थे, तो संडे के दिन भी साफ सफाई के लिए रास्ते पर उतर आते थे। नए जो वाइस चेयरमैन लेक एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी से आए हुए हैं बशीर चौधरी, उन्होंने भी जो है इस पर काफ़ी बड़ी लगन से काम को शुरुआत किया है। डिप्टी कमिश्नर्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट, उनका सबका सहयोग इसमें लग रहा है। जो सिविल सोसाइटी है नालको की हेडिंग में श्री मंजूर वांगनू उसको हेड कर रहे हैं, वो इसमें जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन देते हुए उसको साफ सफाई का जिम्मा कर रही है। So today the people around this Zadibal area, Khoshal sir, Gil sir, they welcomed us, as especially Divisional Commissioner Sahab. Even they put a shawl on his shoulder, which gave me sort of a, goosebumps. So watching these people, how they are happy now. That time was when people would tell them that it's gone, Khoshal sir is gone, Gil sir is gone. No, nothing is impossible. Everything is possible. Let us do with good intentions. Let us help each other. Let us restore these water bodies. Whenever, where our authorities will do the work, we the people must give them helping hand. We must join with them, because without people's participation, nothing is possible.